Hello viewers, welcome back to the class. Today we are going to learn about the definite article. Let us learn what actually the definite article is. The is the only definite article in English language. So today we are going to learn when and how to use the word the as definite article. The is the only definite article in English language, as I have said you, for both singular and plural nouns. You have to remember, for singular and plural nouns, we use the word the as a definite article. Let us learn with rule number 1. It refers to the specific thing or person whose identity is known or obvious to the listener. जैसे हमें एक स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के बारे में हमें अगर पता चल रहा है या पता कोई बोल रहे हैं, then we use the word the for the specific thing or a person. So remember carefully, for a specific thing or a person, we use the. For example, give me the book. I'm not saying that the book. I'm not saying that it can be any book. I'm saying the book. That is, I'm specifying the thing, the book. So give me the book. I can even call it as give me a book. A book, it may be any book. But here I'm specifying the book. Give me the book. That means it is the specific thing. So we use the as the definite article. This is the pen that you gave me. That means I'm specifying the thing here. This is the pen that you gave me. So I used the for specifying pen, the noun. And can you answer the phone? So here, as a question I'm asking, so here I have used the phone. I'm not asking any phone, I'm asking the phone. That is, I'm specifying the phone. So whenever, remember in the first rule, when we specify the thing or a person, then we use the word the. So this is the first rule, and let me go with the second rule. Use before singular and plural nouns when the noun is specific. As I have said you, that means the word the is always used for the specific thing in English language. So the second rule says that use before singular and plural noun when the noun is specific. For example, the teacher. The teacher I spoke to at the school was very friendly. Here there are two definite articles. So where I have specified the person, teacher. So here the specific is the teacher. So I have used the teacher I spoke at the school. कहाँ पे बोला मैंने, किसके बारे में बोला और कहाँ बोला? मैंने बोला टीचर के बारे में और कहाँ पे बोला? स्कूल में. When I am specifying it, so I have used the definite article the. The teacher I spoke to at the school was very friendly. Now, let's go with rule number 3. The is used with unique things or universal facts. अच्छी तरह याद रखें, unique things नहीं तो universal facts. अब यहाँ पे इसमें for example the sun, the moon, the sky, the world, the internet, the government, the police, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे चीजें जो है यूनिक थिंग्स में लिया जाता है, which you cannot change, or even directions, for example the east, the west. So ये सारे चीजें जो है we call those things as unique things, and we calculate them as universal facts. So in the same way, let me go with some examples. The sun rises in the east. The sun rises in the east. अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी बदलता नहीं है. तब हम लोग क्या करते हैं, the जो है डेफिनेट आर्टिकल की तरह यूज करते हैं. हम लोग यहाँ पे a और and indefinite article यूज नहीं करते हैं. So here I have used the east, that is for the direction. I have used definite article the, and here the I have used the sun is for the unique thing. So the sun rises in the east. So यहाँ पे like the sun rises in the east and sets in the west. अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन बोलता हूँ the west. क्यों? क्योंकि directions है. That means for directions also we use the as definite article.
The same way, I have traveled all over the world. I have traveled all over the world. अब यहाँ पे the world definitely use किया जाता है. That is, it's a basic rule in English language. That is, for the unique thing, we have to use the definite article the in front of it. The police are investigating the murder. अब यहाँ पे देखिए पुलिस, हम जनरली इट्स अ सिंगल कैटेगरी, एक बड़ा ग्रुप है, उसको पर्टिकुलर बड़ा ग्रुप को हम स्पेसिफाई जब कर रहे हैं, द पुलिस, कौन इन्वेस्टिगेट करता है? द पुलिस. सो यहाँ पे स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए द जो है हम यूज करते हैं as a definite article. The police are investigating the murder. अब यहाँ पे the और एक मैंने यहाँ पे definite article यूज किया है the murder, क्योंकि अब क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? The murder. उसी तरह the lock opens with the key. The lock opens with the key. अब उससे तो चोर जो है वो बिना की के भी ओपन करता है, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? That is, the lock opens with the key. So the lock opens with the key. अब यहाँ पे दो यूनिक थिंग्स है, एक तो लॉक है और एक की है जो रिलेटेड है एक दूसरे से, इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल the यूज करते हैं. Now let us see when and how we use the in rule number 4 and 5. The is used to refer to nature, landscape और any landmarks. तो अच्छी तरह याद रखें, जो हम नेचर, प्रकृति के बारे में या प्रकृति के कुछ पार्ट्स के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो then we use the as definite article. So the is used to refer nature, landscapes or landmarks. For example, the countryside, इसका मतलब है village, the countryside, the town, the mountains, the beach, etc. तो उसी को हम सेंटेंस में जब बदलेंगे, तो let us see in how it is being used in the form of sentence. I and my friends are going to take a trip to the mountains. अब ये mountains जो है वो एक लैंडस्केप है, एक नेचुरल प्लेस है, तो then we use the as definite article. So I and my friends are going to take a trip to the mountains. Specific है वहां पे. I enjoy the weather. I enjoy the weather in South India. Again देखिए, अच्छी तरह याद रखिए, सारे रूल्स में the कब यूज कर रहे हैं? स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या जब भी स्पेसिफाई कर रहे हैं तब हम लोग यूज कर रहे हैं the as definite article. My daughter loved to spend time in the countryside. तो ये जो the है countryside, मतलब अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो विलेज में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं विलेज को, दैट इज यहाँ पे countryside. So then I have used the word the as definite article. My daughter loved to spend time in the countryside. So उसी तरह let us go with rule number 5. The use with the objects of common experiences. यहाँ पे एक लॉजिक देखिए, मैंने यहाँ पे 3 prepositions लिखा है, at, in, to. इसका मतलब है कि जब भी whenever we use at, in, to, उसके बाद immediate next we use the as definite article. Like common experiences क्या है? Objects, कुछ common places है जिसके बारे में हम बताते हैं. For example, the park, the gym, the newspaper और any media. अगर किसी भी मीडिया के बारे में बता रहे हैं तो we use the. वो भी एक रूल है, रूल के अंदर एक रूल है. So let us see in the form of a sentence. I met my teacher at the park yesterday. I met my teacher at the park. So यहाँ पे मैं common experience बता रहा हूँ, और एक अच्छी तरह लॉजिक देखिए. I have used at, और at के immediate बाद the जो है वो definite article यूज किया है. I read an article in the newspaper. अब यहाँ पे in आ गया यहाँ पे, और the newspaper स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं. We don't listen to the radios. अब रेडियो जो है एक मीडिया है. We don't listen to the media. यहाँ पे to जो है अगेन
preposition यूज किया है और immediate preposition के बाद the radio specify किया जा रहा है। We don't listen to the radios these days। अब आजकल हम रेडियोस नहीं सुनते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे सेंटेंस में बताया है। We don't listen to the radios these days। तो अब यहाँ पे मीडिया हो गया और एक बेसिक रूल क्या हुआ, at, in और to के सामने जब भी हम कॉमन एक्सपीरियंसेस को बताते हैं या कॉमन प्लेसेस को बताते हैं तब हम लोग the जो है as a definite article यूज करते हैं। So whenever we use at, in and to, we use the in front of the common experiences. Now in rule number 6, let us learn how and when to use the as definite article. In rule number 6, the is used in time expression. Remember carefully, listen, it's time expression. That is, whenever we are talking about or whenever we are expressing about a time or a particular period of time, we mention the as definite article in front of that period of time. For example, the morning, the evening. So morning is a period of time, evening is a period of time, likewise afternoon, the afternoon. So whenever we are mentioning the period of time or the specific season or month, then we call it as the, or we use the as the time expression. The day before, the summer, the future, in the 18th century or in 60s. So likewise, let me explain in the form of example. This house was built in the 60s. See, here 60s is an expression of time. So I have used the as definite article for the time expression before. So in the same way, we love to go swimming in the summer. So summer is again a time expression. So I have used the as definite article in front of it. And there is one more logic. Mostly the preposition in is being used in these sentences. So for whenever we are using the preposition in, then we are adding the as a definite article, but it not happens always. So the main rule is whenever we are using the time expression, we use the as definite article. Now let me tell you the rule number 7. Rule number 7, always remember the is used for the superlative form. अब ये superlative form होता क्या है? एडजेक्टिव को हम जब बदलते हैं तो उसको 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बदलते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 में रहता है, एक है पॉजिटिव डिग्री और एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव को बदलते हैं तो हम उस वर्ड के सामने, उस सुपरलेटिव डिग्री वर्ड के सामने हम द यूज करते हैं। लाइक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अब यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने यहां लिखा टॉल जो है एडजेक्टिव, वो पॉजिटिव डिग्री हुआ है। जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव जो है टॉलर में बदल जाता है। तो इसी तरह याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री हम जब कर रहे हैं तो ईयर ऐड हो गया है। अब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो टॉलेस्ट। अब यहाँ पे ईएसटी फॉर्म हो गया। तो ऐसे जब ईएसटी फॉर्म होता है या सुपरलेटिव में बदलते हैं, वी ऐड द इन फ्रंट ऑफ इट। सो दैट इज व्हाट हियर दिस रूल सेज। सो द इज यूज्ड इन सुपरलेटिव forms. Like for example, Mr. Venkateshwarlu is the best teacher I have ever had. So यहाँ पे the best जो है, best जो है superlative डिग्री है, superlative adjective है, तो superlative के सामने हम the use कर रहे हैं। उसी तरह family is the most important. So here most important is a superlative degree. So I have used the in front of superlative degree. Family is the most important thing in life. Now, let me explain you rule number 8, 9 and 10. These are the last 3 rules for definite article. So rule number 8,
यूज विद द नेम्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छी तरह याद रखें, साइंटिफिक इन्वेंशंस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी हम यूज करते हैं या जब भी उसके बारे में बोलते हैं तो उसके सामने हम द यूज करते हैं। Scientific invention and musical instrument. For example, the guitar, the telephone, the telescope. So telephone, telescope, bicycle, ये जो है scientific inventions है, तो इसके सामने हम the definite article use करते ही हैं। तो for example, the guitar, ये musical instrument है, the guitar, the piano, the saxophone, ऐसे जब हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं तो द डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, और साइंटिफिक इन्वेंशन भी जब उसके बारे में बताते हैं देन वी यूज द एज डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ दिस। नाउ इन द नाइन्थ रूल, द इज यूज्ड फॉर द ज्योग्राफिकल नेम्स लाइक द यूनाइटेड कंट्रीज, लाइक जो छोटी छोटी कंट्रीज यूनाइट होके एक होता है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड है, तो द यूज किया जाता है उसके सामने। लार्ज रीजन्स के बारे में बोला जाता है, द यूज किया जाता है। डेजर्ट लाइक द गोबी डेजर्ट, द सहारा, द थार, तो ऐसे जब लार्ज रीजन के बारे में बताते हैं तो द यूज किया जाता है। पेनिनसुलर्स, ओशंस, the Bay of Bengal, the Indian Ocean, the Atlantic, so ये जो है mandatorily मतलब कंपल्सरली वो ओशंस या किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं उसको हम द यूज किया जाता है। सीज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयास, माउंटेन रेंज हिमालयास वो एक माउंटेन रेंज है तो इसीलिए द हिमालयास, सिर्फ हिमालयास बोलना गलत है। तो उसी तरह रिवर्स, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ओके, तो इस तरह द कावेरी, तो इस तरह हम ये जितने भी ज्योग्राफिकल नेम्स रहते हैं वो सारे को हम, तो इन सारे चीजों को हम द यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ द लास्ट रूल, द रूल नंबर 10, बिफोर न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड होली बुक्स, तो पवित्र ग्रंथ जो रहते हैं, एपिक्स रहते हैं, वो सारे बुक्स के सामने हम क्या करते हैं, द जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और न्यूज़पेपर्स, जनरल जो नाम रहता है उन लोगों का, वो नाम के सामने भी द यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द हिंदू, द टाइम्स, द कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता, द रामायण, द महाभारत, ये ऐसे सारे जो होली बुक्स रहते हैं या न्यूज़पेपर जनरल्स रहते हैं उसके सामने भी हम द यूज करते हैं एज अ डेफिनेट आर्टिकल। सो विद ऑल दीज 10 rules we came to know that how to use the as definite article and when to use all these things. So hope you all understood this. So, thank you, and for further more videos please subscribe our channel, and for updates please click on the bell symbol. Thank you. Have a nice day.